nobody is there to take care of us. So for this, we have to be strong, healthy, and we have to be on our own. That is fit at 40, strong at 60, and independent at 80. So this is my motto also. So as long as we are taking care of our health, we can live, and we by that way we are not only helping us, we are helping our children also, because we are not dependent on them. We can take care of ourselves. So let us start how we take care of our health by aging gracefully. That is, without any hitch like some sickness or something. So today, mainly what is more important is the bone health, which makes our body strong, and muscles. And also after 60, when the woman reaches the postmenopausal age, there will be brain fogging. That is, we have to keep our brain alert. And also, the heart, after the hormonal effect has gone, is vulnerable for myocardial infarctions, weakness, and heart attacks. So, for this, we should know what we have to do to maintain all this in a balanced way. At the age of 40, what exactly happens? The ovaries start aging, and the hormonal levels which were balanced during the reproductive age, that will be coming down. This causes estrogen deficiencies starting, and in turn, whatever estrogen was protecting our systems, it gets disturbed. So we will be having the symptoms of estrogen deficiencies. What are like that? The sleep is disturbed. You have not no peaceful sleep. With that, our mood is disturbed, and also because of that, you go into, some ladies go into depression and eat more, and then this they go into increase in their body weight. The body weight also composition increases, it more of the central deposition of the body, so they became um, mid body core of the body will be increasing in size. And with this, there will be some metabolic disorders, and insulin resistance also causing cardiovascular risks, and bone marrow density keeps going on whenever there is estrogen deficiency, especially after that 20% bone loss can occur compared to men, which around 80 years of age. What bone marrow density will be there? It will be seen in the ladies around 60 years. So the estrogen is a main, it has a good role of keeping a lady in fit position. So ऐसा है कि 20% बोन लॉस जाने से अपने को बैक पेन, लेग पेन, नेक पेन्स, all body pains, and then the lady starts becoming sedentary. When they become sedentary, the muscles become weak, and we slowly we will go into sarcopenia, wastage of the muscle mass will be there. So whenever there muscle mass is going on, you will become more weaker, and pains, and the systems, all you all know what happens when a person is sedentary without any exercise. So these things happen when you reach after 40, because even though दिल से, ब्रेन से अपन यंग यूथ फील होते हैं, बट फिजियोलॉजी जो भी है अपने बॉडी में चेंजेस होते जाते हैं, वो तो दे टेक देयर ओन पेस, दे डोंट वेट फॉर अस. सो द ओवरीज स्टार्ट्स reducing their secretions, brain effect होता है. So for that, what we may not change that, मगर थोड़ा बहुत अपन उसका स्लो, सडन आने से अपन स्लो करके हुए अपन without any jerk of youth to menopause, we should go slow, smoothly reach to our postmenopausal age. So today we will talk mainly how to keep our body in a proper fit condition by mostly a change in our lifestyle. What is change in our lifestyle? Food management, and exercises, that is moving our body, and having a peaceful sleep, and some
relieving of stress by some meditation, yoga. Last and the least, because we don't advise to go immediately, okay, we are having hot flushes, start having supplements. It is easy to take the supplements, but you should have change of lifestyle, which helps in so many ways. And then to fill the gap of what supplements are giving us and our depending on our क्या बोलते हैं अपना लोकल एरिया में जो खाने में जो ले रहे हैं उससे अपने को पूरे सप्लीमेंट्स जो भी विटामिन है कैल्शियम है मिनरल्स है वो सब नहीं मिलेगा तो टू फिल दैट गैप एंड द प्रोटीन गैप वी शुड गो फॉर सप्लीमेंट्स which are also important but not first. So we should first learn how to improve our lifestyle. As I said, the physiology has got its own timeline. अब अपन हम अपने हाथ में जो है अपन करने का जो नहीं है बॉडी में जो रूटीनली जैसा अपन बच्चे पैदा हुए जैसा हाउ यू गो बेबी ग्रोस इनटू ए चाइल्ड एंड देन एडल्ट एंड देन puberty say we will go into adultness adult say slowly perimenopausal and menopause. So this is physiology timeline which cannot is not in our hands. What is in our hands is change of lifestyle. So before, as long as a woman is fertile, she is premenopausal. That is what we call. Premenopausal is that period where you have regular periods and you will be able to produce the babies or fertile. So next we go into perimenopausal age. Usually up to 40 is premenopausal and the perimenopausal area play time is around before about 3 to 4 years before our cessation of final menstrual cycle to 1 year after that. Only after 1 year, that is 12 months without regular periods, we call it as menopause. Before that, sometimes in perimenopausal age, you will have irregular periods and all other symptoms which we will be discussing later. Stroke, what are these we call it as a staging of reproductive aging workshop में थोड़े guidelines दिए हैं वो guidelines क्या perimenopause में you have 3 areas that is late reproductive that is up to 35 to 40 late reproductive and then early perimenopause up to 40 to 42 years and late perimenopause is just the 45 46 and around usually on average 46 we take it as a menopausal age वो में वो 46 years में आपको final menstrual period that is last period आ जाता है after that for 12 months अपने को period नहीं आता नहीं आने के टाइम पे then we call it as a menopause. So the final menstrual period to menopause is very important because there is going to be बहुत ही bone loss. That is more than 20% of the bone loss. That a time you have to be very careful. वो bone loss को कम करना. Let us discuss बाद में मैं बात करूंगी कैसा bone loss को कैसा what are the things अपन दिए तो अपना bone loss maintain कर सकते हैं. Then after the menopause we are reaching when once when you have once you reach menopause again there is early postmenopause late postmenopause early postmenopause में क्या होता है you have hot flushes suddenly you feel hot and then sweatings and then you get like exhaustion then the night sleep will be disturbed not very peaceful sleep hardly 3 4 hours sleep again you wake up 1 2 hours you don't sleep all these disturbances will be there when you reach late menopause, late postmenopause, that there you are going to have cardiac problems and bone problems and suppose you बहुत ही लोग आफ्टर 50 यू जस्ट घर में किसी को भी यू गो फॉर सम फैमिलीज में पूछे सोसाइटी में आफ्टर 50 people just slip in the bathroom and they fracture their forehand or hip mainly hip fracture is common to the elderly ladies because of their bones get become more osteoporosis बोन में क्या है देख ऑस्टियोक्लास ऑस्टियोब्लास्ट बोल के रहते हैं उसमें फर्स्ट बोन फॉर्मेशन बोन
विथड्रॉयल भी होता है. सो बोन फॉर्मेशन अगर कम होती रहती है क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है, एंड देन यू आर नॉट टेकिंग गुड nutrients which increase the bone formation. And because of estrogen deficiency, estrogen कम होने से आपका बोन विथड्रॉयल जो भी है वो ज्यादा होता है. उससे यू बोन बिकम ऑस्टियोपोरोसिस, पूरा नरम हो जाता है बोन. दैट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ विल नॉट बी देयर. फॉर दैट just a small injury, just you slip, you are going to fracture your bones. And also हार्ट जो प्रोटेक्ट होती रहती थी है एस्ट्रोजन से, देन देर इज नो प्रोटेक्शन. देन दिस बी एज ग्रुप विल बी हैविंग कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट इज हार्ट अटैक्स बहुत आते रहते हैं ये एज में. सो एंड ऑल्सो हाइपरटेंशन इज मोर, एंड because of metabolic syndromes, insulin deficient, diabetes will be more, and you will have obesity, which is leading to many other disturbances like calcium, वो क्या बोलते हैं, cancers and other age related problems, and brain fogging, and may lead to Alzheimer's also. So whatever we were discussing, अभी जो बात कर रहे थे वही है इसमें. bone health, accelerated loss because of estrogen नहीं है, loss ज्यादा होता है. मसल्स विल कम वीक बिकॉज यू बोन पेन्स है, आप ज्यादा चलते नहीं, ना वॉकिंग करते हैं, ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स बिकम वीक. दैट इज कॉल्ड सार्कोपिनिया. सार्कोपिनिया इज वेरी डेंजरस, एंड यू ऑलमोस्ट बेड के ऊपर से ले उठ के चलने के लिए भी मसल्स विल नॉट सपोर्ट अस. सो दिस इज वेरी, इट्स अर्ली साइन. मसल वीकनेस इज द अर्ली साइन. एंड देन as I told you, metabolism and heart will also get adverse shifts होते रहते हैं menopause में. then you are going to get cardiac problem, and all sleep, vascular risk factors, that is blood clots होते रहते हैं. You will get, if you are a diabetic, you will get diabetic foot and ulcers, वो सब vascular risk factors है. then all this will happen midlife में अपना, after 45 to and all. So, how to fill in all these, fill the gaps with our change in our lifestyle? The top 9 nutrients which are very very important, अपने को बहुत ही important है. So ये 9 nutrients क्या है? For bone health, you require calcium होना है, vitamin D and vitamin K. Vitamin K also helps in bleeding problems also, and bleeding from gums, bleeding from brain, heart. कहीं तो भी बीपी रेज हुए तो हेमरेजेस होते रहते हैं, उसका vitamin K is important. And we have brain balancing is mainly omega 3 and phytoestrogens which you get from the plant products. And protein, magnesium, iron, which helps in muscle and metabolism. Metabolism of every day, what, whichever, even sleep has some metabolism. So for all that we require protein, magnesium and iron. Of course, आयरन का डिमांड जो मेनोपॉज के बाद कम होती है क्योंकि menstrual cessation हो गया है, there is no loss of blood. that's why iron deficiency, iron कम requirement है, मगर magnesium and protein is very important. so ये magnesium जो है अपना मसल क्रैम्प्स, रात में सोते हैं तो मसल्स क्रैम्प उड़ जाएंगे अपन, इट्स पेन सो मच, then repeatedly you have cramps at other places of our body muscles. So for that you require magnesium and good hydration. And protein, you all know, it is needed for every part of our body, starting from hair to and our toes. So everywhere you require protein. The requirement of the protein is almost 1 gram, near 0.8 to 1 gram per day per kg weight. So suppose we are about 65. So you require 65 grams of protein per day in divided three meals जो अपन breakfast, lunch, dinner करते हैं, उसमें we have to divide our protein levels in that. And for as the age increase have I mean regular normal diet में खाने को इच्छा कम होता है.
तो खाना इच्छा कम होता है, the protein will be low. And at that age, suppose a lady is in the house, and who will take care of her health? How much food they get? Usually, middle class and lower middle class people will not bother about much of on the nutrients. तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बड़े लोगों को थोड़ा लाइट दाल रोटी ऐसा दे दे के, तरकारी थोड़ा थोड़ा, एंड उसमें खाने को भी अच्छा नहीं रहने से अपना प्रोटीन लेवल्स विल बिकम वेरी लो, एंड दैट कॉजेस muscles weakness, and then brain fog and cramps and tingling numbness, all these things will start. So what's the goal for us? It is the aim for adequate food nutrients through our food. So the protein, we were discussing, it is anti-sarcopenia tool. That is muscle wasting को रोक लेती है. So what is the muscle? The midlife से अपने को start होती है muscles weak. When you are young, you are all having gents है तो six packs रहते हैं. Ladies will become look nicely. And as the age progresses, you take it like अब ऐसा बोल रहे थे अभी एज आ रहा है ना, वैसे ये काम में सब we take it as it is the routine, but it is not so, because we are going to live for another 20 years. For that, उसके लिए अपन अपना प्रोटीन क्वांटिटी जो भी है लेना चाहिए. सो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से अपने को स्ट्रेंथ आता है, और मसल लीन, आई मीन फाइबर का जो लेंथ रहता है, उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग इज एक्सरसाइज. यू हैव टू डू, और बेल्ट रहता है उससे खींचना, ऑल और दोस फिजियोथेरेपी में जो भी मिलते हैं, और यू गो टू ए जिम और यू गो टू yoga also, you have all these things. And as I told you, it is 0.8 to 1 gram per g per day meals में distribute करना चाहिए. So if you, as you are saying, protein may we take it as leucine, 3 to 4 grams of leucine, that is equivalent to 30 grams of protein. And better it is in each meal it should be divided. So breakfast में milk, almonds, all those things you are able to see who are rich in protein, and especially tofu and legumes, and then nuts and dal. एंड नॉन वेज खाने वाले तो नॉन वेज है, एंड एग्स खाने वाले में तो एग में भी प्रोटीन है. तो जो आर वेजिटेरियंस, all these products will be like, chickpea and all those things which are, if suppose they are suiting our body, it is better, we take all those things in a regular limited value, dividing in the 3 meals. Next, then we come to calcium and vitamin D. ये तो बोन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सबको मालूम है. एंड आफ्टर एज 50 लेडीज में अपने को 1200 मिलीग्राम्स पर डे कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, एंड विटामिन डी up to 600 to 800 international units of vitamin D is required. So that has to be supplemented, because we don't go and sit in the sun for vitamin D. So we have to take, and usually whatever supplements we are taking, calciums after, we all are included by vitamin D. So supplements prevents fractures. Routine low dose regular calcium supplementation has to be taken even though food में है. फिर भी calcium supplementation is required, because the requirement is quite high, 12 milligrams per day, 1200 milligrams. So first we will prioritize food. What are the foods rich in calcium? Curds, dahi, ragi, millets, and tofu. Tofu, actually, tofu is very good in protein and also in calcium, but उसका taste and smell I don't like. So किसी को पसंद है, that is the best food. And all this will cause bone deposition. Bone deposition, bone resilience will be increasing. And the withdrawals, why it is increased? Because we are not taking properly, and estrogen decline is there, which causes low bone density, and also sedentary lifestyle. That is very, very important. Even if you are 90 also, you should do some, at least 15 to 20 minutes of walking every day. Make it a habit.
ये कभी अभी घर में फिर रहे, इट्स नॉट दैट 15 minutes. Make it as a your exercise. Walk in the veranda or walk in front of your house or up a flat top or terrace पे कहीं भी एक 15-20 minutes चलना जरूरी है, even if you are 90 years. So to reduce the bone density, you have to have all good calcium rich foods and have activity, active life, what I mean. Then we come to omega 3. It is helps in the brain nutrition. Usually because we are living for a longer period, 80s में कितने population, if you take money, people are living up to 80 years. So 80 years में Alzheimer's, senile degeneration, memory loss, and all these things you don't want, because what is the point? वो vegetable का life, vegetarian वेजिटेटिव लाइफ में अपने को क्या मिलने वाला है? इंस्टेड वी कैन पीसफुली गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड. इफ यू आर लिविंग, यू शुड बी alert in your brain and at least your daily routine अपना जो our work, where you are keeping your pen, where you are keeping your keys, where you are keeping your mobile, at least that has to be in our thing. For उसके लिए तो brain nutrition is very important. उस what is it, the in which one, what helps us to keep our brain in good health? It is omega 3. You get omega 3 from fish, flax seeds, and walnuts, and those will the and also you have to have some supplement omega, because all these, how much do we eat for our requirement? So when you give omega supplement and also the food supplementations, definitely our brain function will be improving and also cardiac function. And high dose में से अपना, depending on our requirement, we should, the safety is 2 grams per day DHA. So you should not go more than 2 grams for a low weight वाले patients को भी, सबको उनको ज्यादा 2 ग्राम्स से ज्यादा होना रिक्वायरमेंट है, देन यू गो टू ए डॉक्टर. यू जस्ट डोंट टेक अपने आप टैबलेट्स सप्लीमेंट्स लेना चाहिए. सो फर्स्ट फूड, देन add with your omega 3 supplement. हाँ, then comes as your energy, mood, cognition, ये सब क्यों? Why do we require B12 and iron? B12 requirement is 2.4 micrograms per day. Whenever B12 is low, you get really fatigue मिलता है, and all tingling numbness, और रगों में पेन है, खींच रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स आके कंप्लेंट बोलते रहते हैं. देन वी डेफिनेटली आई गो फॉर B12 serum B12 levels. Whenever, because B12 levels are more in vegetarians, because it is more in animal and only fortified supplements में मिलता है. And also if your patient is a diabetic, metformin and regular usage of sorry, antacids, they will cause the deficiency of B12, because all are not non-veg eating people. So vegetarians usually suffer with B12. So we have to supplement B12 in our tablets form, like, either it is daily or natural B or whatever it is. And next, iron. As I was just discussing you before, इससे पहले मैं बोली भी, इससे पहले जितना अपना प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव एज में कितना रिक्वायरमेंट है, उतना रिक्वायरमेंट अभी नहीं रहता है, अभी कम होता है. सो यू शुड नॉट टेक मोर ऑफ iron tablets. नहीं, you check your blood hemoglobin, check your ferritin, that is iron stores. Ferritin is iron stores. Serum ferritin levels देखते हुए you can supplement with iron. And iron rich foods are, you all know, leafy vegetables, carrots, beetroot, and all pomegranate, and um, गुड़ को क्या बोलते हैं, jaggery, and all those things will help in increasing our iron supplementation in food. And suppose it is more, then we have to go for iron supplements. Then comes our cramps, our bleeding disorders, muscle pains, all those things will come with help
magnesium and vitamin K are the very quiet nutrients that we have to be added up. And you get magnesium in all fresh vegetables, mainly spinach, and you get in fruits like banana and pumpkin seeds, almonds, and other tofu and all. And vitamin K, all greens. Bone health, it helps in bone health, and sprouts you eat is good, and clotting factors may. So vitamin K makes the bone matrix. उस मैट्रिक्स मतलब जो अभी पिक्चर में आपको जाली के वैसा दिख रहा है वो है मैट्रिक्स, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है. सो विटामिन के डेफिशिएंसी में भी कैल्शियम लेने के बावजूद भी यू डोंट हैव टू, यू विल गो टू व्हाट डू यू कॉल ऑस्टियोपोरोसिस. सो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए along with vitamin I mean calcium and vitamin D, you require vitamin K also. You have to maintain vitamin K levels depending on the how much our levels are there. We have to check and ask your doctor, or else we have these days we are getting calcium, magnesium and vitamin K combination में मिल रहा है. So that also supplements you can take. And magnesium helps, prevents in muscular cramps, and also helps in nerve health. So, and also it helps in good sleep also. When you are not getting good sleep, first you supplement with magnesium and good hydration, you will not have muscle pains and you will have a good sleep. So the requirement is around 350 milligrams per day. If you take more than 350 milligrams, thoda GI side effects like pain and then loose motion or constipation depending on body nature. So if you are taking more, your BP also will reduce. So please be careful. Check your BPs when you are taking magnesium supplements in high dose. And also vitamin K helps in blood clotting. एंड स्पेशली यू पे अभी हार्ट अटैक आया है, कुछ स्टेंट लगाया हुआ है, ऐसे में आपको ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर. देन यू हैव टू टेक विटामिन के आल्सो टू सप्लीमेंट. इनसफिशिएंसी है नहीं, टेस्ट तो करना जरूरी है. एंड इट इज ऑल doctors will give you personalized approach in prescribing vitamin K and magnesium. And comes soy phytoestrogens. This is very important, especially in menopausal ladies, because our body which is producing estrogen has come to almost nil levels, except अपना फैट से थोड़ा estrogen secrete होता है, मगर ovaries को failed. They are completely gone. देन अब ऐसा एस्ट्रोजन ओवरीज में नहीं तैयार हो रहा है, थोड़ा बहुत फैटी पीपल में होता है, बट यू रिक्वायर ऑल दोस प्रॉब्लम्स तो रहेगा ना. Heart flushes and bone health and sleep disturbances and breast safety. Estrogen prevents our breast cancer. So all these things we will be facing the problems. Estrogen नहीं है तो क्या करना चाहिए? You have to have estrogens also. We have estrogens from plant sources. They are phytoestrogens. They occupy वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स जो बॉडी में रहते हैं उधर जाके अटैच होते, then it behaves like estrogen. So that's how you get symptomatic relief. जैसे ये क्या hot flushes कम होते रहते हैं, then it has some effect but not complete. तो किसी किसी को इतना hot flushes, especially menopause is natural menopause will helped by this. Natural menopause नहीं, surgical menopause है, कुछ complication हो गया, कुछ cyst हुआ, ovarian cancer हुआ, कुछ और problem हुआ, surgically ovaries are removed, then you are going to get a sudden loss of estrogen. उस पे बहुत ही effect रहता है. Severe hot flushes, then you need estrogen supplement. Estrogen supplement, you have to consult a gynecologist, and depending on your liver function, your other cardiac function, वो सब देखते हुए breast examine करके, then they will give you estrogen supplement. So for a routine natural is menopausal woman, it is better we go with soya beans and soya milk. You get soya products, a lot of soya meal makers and chunk granules, and also a tofu is rich in phytoestrogen. So all these will reduce the hot flashes.
And in along with hot flushes, you also have beneficial effect, better thing on bone, heart, breast, and your normal casual well-being. Yeah. Then अपना रोट इन जनरल नाउ अब तक तो अपन ये प्रोटीन खाओ, ओमेगा खाओ, मैग्नीशियम खाओ बोलते गए. अभी इन जनरल अपना अपना प्लेट क्या क्या रहना चाहिए व्हेन यू आर रीचिंग द मेनोपॉजल एज. सो WHO क्या बोलते हैं? लेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स. प्रोसेस्ड मतलब ये अपना जो जंक फूड मन अपने सुपरमार्केट्स में जो मिलते हैं वो टिन्ड फूड्स एंड चिप्स एंड ऑल दोज स्टोर्ड फूड्स कम करना है. नेचुरल फ्रेश फूड्स आर गुड. एंड लिमिट द फ्री शुगर्स. शुगर्स का कम करना चाहिए. शुगर इज ऑलवेज बैड. इट इंक्रीजेस योर वेट, इट इंक्रीजेस योर इंसुलिन रेजिस्टेंस. सब कुछ शुगर से ही प्रॉब्लम है. तो वी हैव टू रिड्यूस शुगर लेवल्स. एंड अनहेल्दी फैट्स विथ लॉट ऑफ सोडियम. सोडियम ज्यादा किसमें? यूजुअली अपना इंडियन उसमें बगैर पिकल का खाना ही नहीं चलता. सो यू एंड द पिकल्स आर full of sodium. So you can have something to taste के लिए, taste to satisfy your tongue, taste buds. You can have pickle, but not regularly all meals and ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. So unhealthy fats avoid करिए. And sodium excess like in pickles and in stored processed foods में थोड़ा कम करना चाहिए. And we have two patterns of diets, that is Mediterranean and Dash. So Mediterranean में क्या? Better cognitive outcomes, उसमें brain का activity का ज़्यादा. And Dash में it's like it gives you cardiometabolic cardiac support और metabolic क्या है? Insulin resistance वो सब. So what is it? In Mediterranean diet, it is Indian vegetarian with eggs, minimally processed whole grains like chapati, roti, and brown bread, I think. And then you have vegetables, fruits, dal, nuts, and plant-based proteins and eggs. Fruits, nuts, ये three portions अपना mainly half of the portion is that, and vegetable and fruit and dal, nuts will occupy one almost this is half, so this is almost two-third. ये जो है छोटा plant-based proteins, eggs, and then tofu, and then जो प्रोटीन दिख रहा है ना वो, that is little less. So this is Mediterranean diet. And when you go to dietary approach to stop hypertension, you are a hypertensive, better go for this. And you are an Indian vegetarian with you are an Agrarian also. उसमें आपका मेथी, पालक, greens, other mustard, जो भी अपना greens, so many varieties of green vegetables are there. All that you can have. And you can should have bananas, magnesium rich है, minerals का, और भिंडी है. All those fruits and all which all improve the cardiac metabolic risk factors को prevent करते हैं. And plant based proteins में अपना nuts है, tofu है, and egg. And low fat dietary, you should have वो जो अपना लो फैट मिल्क मिलता है ना, उससे अपन कर्ड बना लेना. एंड अदरवाइज इफ यू कैन गेट योगर्ट इन योर बिगर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स लेवल्स, अभी भी you get those yogurt with low fats. That is also good because that is rich in calcium and protein, low in fat. And you can have whole grains में millets and then jawari का वो, plus you without fine मैदा वैदा से रोटी नहीं, होल ग्रेन से जब गेहूं का आटा पीस के बनाने में अच्छा रहता है. एंड ऑल्सो ऑल दीज प्रोटीन्स, लूबियाज एंड देन ड्राई फ्रूट्स में जो प्रोटीन का जो रिच रहते हैं वो सब ले लेना है. दिस इज डैश डाइट प्रोग्राम विच हेल्प्स इन cardiac and metabolic, and this helps in generally general health में Mediterranean diet is also is okay. But you are a hypertensive, you better go for this sort of diet. So the main आजकल weight increase is the main important, obesity is the main
crux of our problem in Indian population. उसमें अपन कैसा mainly waste increases, and because we are taking more of carbs and muscle is coming down. So when you are going with glycemic index curve graphic, when you are taking high, like sugary carbohydrate, high carbohydrate diet, the sugar levels immediately after food, it increases to high peaks. Then sudden rapid energy drop होता है. उससे क्या होता है, अपने को फिर भूख लगने जलता है. And when you eat, you will get the real energy. And then suddenly drop होने से फिर you feel like eating some more. Again you eat some more. Again ऐसा ऐसा करने से क्या, you increase in your weight. And when you are taking a low glycemic index food, rich foods like spike is low and gradually it is stable, blood glucose will fall, then you will not feel hungry or craving nahi hota hai. And it is mainly protein fiber rich breakfast that helps in sustained energy release. What is protein rich fiber? You have to have some salad fiber like protein and salad, cucumber, carrots, all those salads में, and different varieties you can make, and then that helps in um, proper glycemic जो curve जो रहता है that maintain होता है. So avoid high carb breakfast and take more protein fiber rich breakfast. And when you are going from menopause transition, the metabolism में आपको lipid levels increase होता है, insulin resistance increase होके sensitivity कम हो जाता है. So that also helps, causes increase in deposition of the fat. So in lipids में अपन अपना जो trans fat in the, then I am not sure in non-veg, but this is more of butter and all those are trans fats, and reduce the saturated fatty things, and सबसे सबको in all those things fiber you have to increase, because fiber से three benefits are there. क्या है? पहले tummy full होता है, so you take less of carbohydrate, and also it is good for good bacteria. Fiber is a good nutrition for good bacteria in our gut, so it improves our gut health. So the fiber is very important in maintaining our gut health and maintain our weight. So blood sugar stability, fiber, protein distribution, and energy will be increased and cravings will be down. Then you will be losing your weight and maintaining your weight. Then comes our lifestyle, is which is very difficult to follow. ये आदत बनाना मुश्किल है, बनाना जरूरी है. Habit has to be done every day. At least 45 minutes of some sort of exercise is needed. इसमें अपने चार्ट में अपने को वॉक, वो एक्सरसाइज, वो जिम के जो भी वेट्स स्ट्रेंथ के हैं, ये सब दिए. You select whichever you like, but you do at least 30 minutes walk to compulsory, and some of the yoga stretchings, and then asanas, and then this will help you active all through the day, fresh all through the day, and your bone marrow density improve होते हैं, muscle strength improve होने से you will avoid sarcopenia. All these things are very very important. Food के बाद exercise is very important, at least 150 to 300 minutes per week. Moderate activity. घर में sedentary रहने से you are going to be facing a lot of future problems, and especially cardiac and obesity related problems. This is also an important for everybody's life. Food, exercise, and sleep. These are three main things which keep you healthy. So sleep क्यों कम होता है? All this we were talking about, magnesium levels कम होना, लो glycemic वो प्रोटीन कम होना, इससे sleep disturbance होता है. And all this sleep कम होने का वजह भी gadgets है आजकल का. And people for till late night they keep watching reels and then films and TV, or programs on TV till late night, and then they sleep. All those sounds and then
ultraviolet rays which are going into the brain will reduce the sleep and sleep quality. Quantity of sleep, quality of sleep. That increases your stress. When there is stress, you will have sleep problem. Then when you are not sleeping, you feel like eating something. You are in चलो कुछ खाएंगे. खाने फिर you increase your weight gain. Weight gain in fear in all the cycle like it worsens your other symptoms. So this transition of menopause usually affects sleep because it is insomnia clinically relevant important है. And why पुराने जमाने में I remember uh, that film नया नवरंग पिक्चर उसमें द हीरो स्लीप्स लेट इन द मॉर्निंग्स. तो उनके ग्रैंडफादर फादर को भी बोलते हैं, अरे जवानी में सुबह सुबह बहुत नींद आती है, हमारे एज में नहीं आता है. दैट मीन्स वी ऑल नो दैट एज यू एज यूर स्लीप विल बी reduced. We have taken it as granted, but if you maintain your body and your food and your lifestyle, you sleep nicely, so many things will fall away, go away from you. If your sleep is good, you are not stressed out. कुछ टेंशन है घर में, कुछ प्रॉब्लम्स है, you will be thinking about it, you don't sleep. You have some problem at your office, you problem at some बहू के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, किसी भी घर में प्रॉब्लम है, you don't sleep. All this causes sleeplessness. और sleeplessness causes increase in stress. This cycle keeps on going. So complete ये जो menopausal symptoms है ना, very very important to be having like कम होना है, नींद अच्छा रहना है, एटलीस्ट 7 to 8 hours per day. एंड एक्सरसाइज से बॉडी थक जाता है, नींद आ जाता है. एंड आफ्टर दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 5 to 10 minutes सिट फॉर विथ यूर सेल्फ. अपने आप बैठ लीजिए, बैठ के एक 10 minutes क्लोज योर आइज. आई नो अब जब भी व्हेन यू आर मेडिटेशन बोले कोई, अरे बहुत सारे आ जाते रहते हैं थॉट्स आते, लेट देम कम, लेट देम कम. बहुत आना जरूरी है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट वेन एवर दे आर कमिंग, concentrate on your breathing. When you are breathing, concentrate in your inspiration and expiration को जो लेते हैं उससे आप concentrate करें. Again you are getting your brain to yourself. ऐसा slowly 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 you will reach to a stage when you can very peacefully sit for 5 to 10 minutes without any thoughts. That will not come in a day or two. So अरे ये क्या, इससे अच्छा कुछ रील देखे, वैसा नहीं. यू routinely ऐसा एक meditation, this meditation part and yoga part, exercise part are very important in anybody's life, not only in menopausal women, but it is more नेसेसिटी बहुत ही है, क्योंकि देयर इज नो बडी टू हेल्प वुमेन व्हेन यू आर रीचिंग 80. आपके पास बच्चे नहीं रहेंगे, सब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, आपको कौन देखना. दे विल कीप यू इन ए ओल्ड एज होम्स. देयर नो बडी टेक्स केयर. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी हैव टू improve our health. So when we recognize the gaps, whenever you have low anemia is your wound healing will be less and hair will become brittle. Like इससे पत्नी इतने smooth रहते हैं, अभी brittle हो गया. All these are protein deficiency. And calcium, you have cramps, tingling, and even tooth का enamel भी जाके tooth sensitivity increase होते रहता है. So all these indicators will increase your problem. Definitely you have to consult a doctor or take supplements. Routine supplements you can go with our Amway. All supplements are 100% beneficial, good. But if you still after that you are feeling any this thing, you have to go and consult. ये magnesium ka anxiety, palpitation and twitches, and vitamin K you may have small sudden bluish skin bruises, nosebleed and heavy bleeding. Perimenopausal women में ज़्यादा bleeding होती रहती है. Then you have to think about vitamin K deficiency, and dry skin, brain fog, stiff joints will go with omega 3 deficiency. And whenever you have these issues,
you have to supplement. So low estrogen signs, as I told you before, hot night, hot flushes, and sweats in the nights, and memory brain fog. And अभी इधर कुछ काम करते करते अपन भूल जाते रहते हैं, भुलक्कड़पन ज्यादा होता है, और irregular periods, reproductive, just pre-menopausal, perimenopausal people, you will have irregular bleedings, vaginal dryness, so sexual dysfunction होते रहते हैं, and bone pains, and axillary, and you will be going into osteopenia. That is one stage before osteoporosis. So वो सब estrogen checklist में रहता है. And next you have to supplement estrogen कैसा? Soybean, flax seeds, tofu, chickpea, whole grains, and badam and all, and fresh fruits. So only to regular food supplementation is this. And when you require to close the gap, you have to take the supplements. And deficient, before you take a lot of supplements, you should confirm by with getting your lab test vitamin D, B12, and iron. That is very safe, instead of putting more and more supplements which are not required also. Huh. Perimenopausal age is very important. Bleeding, if you take after menopause, is very much abnormal. You have to go to a gynecologist. Gynecologist के पास जाना है, pap smear, ultrasound, and जरूरी पड़े तो they will advise you endometrial biopsy, all these things, because this is the age we are going to face malignancies, cancers of uterus and cervix, and sometimes even ovarian malignancies, ovary का कैंसर भी ब्लीडिंग के वैसा अपने को दिखता है. सो यू हैव टू कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट. जाना है, पूरे डिटेल चेकअप करना जरूरी है. Especially once in a year, regular checkup is mandatory for all the women of post-menopausal and perimenopausal. Whenever there is severe hot flushes, severe persistent mood disturbance, and sleep disturbance, then you go and talk to a doctor. She will give you first non-hormonal and zaruri pade to hormonal supplements. When HRT बोलते हैं, hormone replacement therapy, that we will be, depending on your health status, we will give you. And when you get, you are prone for, as मैं अभी पहले बताई थी, when your bones are weak, bathroom slipping, steps चढ़ते हुए नीचे गिर जाना, and all will be breaking our bones. So high fracture risk is there in this group of age of late. At the end, I would like to tell you, it is not the end of our life. It is the beginning of new health strategy. At 40, these days especially, we are all starting our new life, starting. To tell you frank, really, I started my practice when I'm 38. So it is not the end of our life, it is the beginning of your health strategy, and you have to be very conscious of your health. And you should not fear that, अरे 40 हो गया, अब चलेगा काम. नहीं, you need awareness. When you are aware, you will do your lifestyle changes, and you eat proper food, and you eat, and you will require, you will go for a timely support of the doctor. Cardiologist भी हो, gynecologist भी हो, कोई physician भी हो. And small daily habits, you make it: better food, better sleep, regular movement, as I was telling you, exercising, and you can protect your bones, mind, heart, and confidence. I repeat, fit at 40, strong at 60, and independent at 80. You are not more any dependency nahi rehna chahiye when we are reaching 80. We have to take care of ourselves then, so that ending our life should be very peaceful, and say goodbye to the world very happily and peacefully when you when अब जब भी बुलावा आ गया, and guiding me with all these slides. And I hope I could give थोड़ा message मैं pass कर सकी. And supplements जो भी है, like I take, मैं सबको बोलने का नहीं, every day I take 10 supplements, like daily omega, calcium, and my
ashwagandha, my tulsi, my sometimes I take with coenzyme Q also. So almost I have bunch of इतना tablets ले लेती हूँ supplements so that I'm still able to work and take the stress of all complicated cases. And I hope those people who have joined also got my point of lifestyle change and proper food and exercise and then and supplements. Thank you very much, sir. थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं क्या बताऊं कि आप तो हमारे टीम के लिए ब्लेसिंग्स है। सो इतना दिल से आपने बात किया, अपने एक्सपीरियंस से बात किया, और मतलब खुद का एग्जाम्पल आप सेट किया है। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब अमेजिंग सेशन हुआ ये। एक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि एक एंटिक पीस जो होता है, एक संगीत बजाने वाला होता है, वो कुछ ये करता है उसी तरह से। मतलब आपके जो शब्द है, आपने जो कुछ भी पॉइंट्स बोले उसमें बहुत बारीकियां थी। इसका हमने रिकॉर्डिंग किया है, और जो भी लोग इसको दोबारा 3 बार 4 बार सुनेंगे, उनको और भी गहरे मतलब इसमें से उनको समझ में आएंगे। बहुत ही अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट किया, सो थैंक यू वेरी मच। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट आपके तरफ से जो है, मतलब आप वुमेन हेल्थ के लिए आप ही के तरफ से ये सबसे बड़ा गिफ्ट जो है आपने हमारे टीम के लिए दिया है। सो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट बात करके हम ये सेशन को क्लोज करेंगे। तो मैडम ने जो है बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बात किया है। उन्होंने खुद भी बोला है कि वो खुद भी ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, और ये सप्लीमेंट्स लेने की वजह से उनका इफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छा रहता है, वो भी उन्होंने बताया। तो हमारा जो न्यूट्रीलाइट है, एमवे का जो न्यूट्रीलाइट है, तो न्यूट्रीलाइट के कुछ सप्लीमेंट जो है वो मैं यहाँ पे आपको जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि ये मकसद है वो यही है कि हर वीक को जो है हम किसी न किसी एक्सपर्ट को आपके सामने लेके आएंगे, और हेल्थ के बारे में जो है कुछ न कुछ आपके लाइफ में चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम ने बोला था कि प्रोटीन जो है वो हमारे मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन है। और मैं आपको बताऊं कि मार्केट में एक जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है, और यहाँ पे जो ये ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये प्रोटीन आइसोलेट है। तो इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है आइसोफ्लेवोन का, जिसके बारे में मैम ने बताया कि आइसोफ्लेवोन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आफ्टर मेनोपॉज। सो इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। और ये आप आपके टेस्ट को मतलब बगैर बिगाड़े आप इसको आपके डाइट में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जो 9 इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स बोले थे, ठीक है, उसमें से बहुत सारे जो है वो डेली प्लस में है। ये इसमें मल्टीविटामिन है। और इसमें एडिशनल चीज क्या है, तो ये स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है। उसमें ऐसे हर्ब भी है कि जो हमारा स्ट्रेस भी कम करता है। ओमेगा 3 जो है वो हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, वो भी मैम ने बताया था। तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है ये हमारा फाउंडेशन प्रोडक्ट है। और इसको अगर आप न्यू है तो आप ट्राई कर सकते हैं हमारा पीडीओ पैक, प्रोटीन डेली ओमेगा पैक जो है, इससे इसके साथ इसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैम ने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए थे कि आयरन सप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कैल्शियम, और कैल्शियम की बात जब वो कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि उसके साथ मैग्नीशियम और K2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ जो है हमारे कैलमैक डी के अंदर है। और विटामिन B12 जो है, आपका जो विटामिन B12 जो विद इन रेंज है, उसको विद इन रेंज रखने के लिए जो है ये विटामिन B+ इस प्लस जो है ये सप्लीमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिसने भी इनवाइट किया है उनसे मिलिए, इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। और लास्ट में मैं फिर से एक बार डॉक्टर रमा देवी मैडम को, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपको बता नहीं सकता, उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है उनका। आप अगर एक बार विजिट करेंगे उनके हॉस्पिटल को तो आपको पता चल जाएगा कि उनका कितना बिजी शेड्यूल रहता है। तो उतने इसमें उन्होंने समय निकाला, दिल से बात किया, और ये सब जो है चीजें जो है वो खुद अमल करते हैं, और अपने अनुभव से उन्होंने ये हमको बता दिया है। तो ये सब चीजों के लिए जो है
मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। और सुधा मैम और प्रतिमा सिंह मैम, सभी जितने भी लीडर्स हैं उन सबके सबको मैं थैंक यू करता हूँ। और लास्ट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज अपना 1 घंटे का समय निकाल के लाए हैं, हो सकता है कि कुछ फैमिलीज में जो है वो लेडीज के साथ जेंट्स भी बैठे होंगे, तो उनको पता चलेगा कि अगर उनके घर में कोई 40+ लेडीज है तो उनके शरीर में कितने सारे बदलाव हो रहे हैं, और उसके लिए सप्लीमेंटेशन और डाइट और समझना उनको कितना जरूरी है। सिर्फ हैप्पी वर्ल्ड वुमन डे का स्टेटस लगा के काम नहीं होता है, तो उनको सपोर्ट करना है, ये हमारा मकसद है। सो विद दैट मैं सबके परमिशन से ये सेशन जो है इसको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हम मिलेंगे अगले संडे एक नए सब्जेक्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, हैव अ Thank you. नाइस डे। Thank you for all your participation. Thank you very much.